Hello students, in this class we'll see the difference between JDK, JRE and JVM. So be attentive to understand it because you need to really know this. So first we'll see Java Development Kit, JDK, whose short form is JDK or the full form of JDK is Java Development Kit. Why we need this? So if anybody wants to make any app, any software using Java, then he must have JDK in his system. यानी कि अगर आपको किसी भी तरह का ऐप बनाना है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है जावा के माध्यम से, तो आपके सिस्टम में आपके पास जेडीके होना चाहिए। जेडीके होगा तभी आप प्रोग्राम बना सकते हैं। इट इंक्लूड्स जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जेडीके में जावा रन टाइम इन्वायरमेंट भी होता है साथ में। ये क्या है, ये भी हम लोग सीखेंगे। एंड इंटरप्रेटर, लोडर, कंपाइलर एंड अदर थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट टू मेक a software, everything is available in JDK. JDK is for whom? किसके लिए है JDK? JDK सबके लिए नहीं है। JDK सिर्फ वैसे लोगों के लिए है जो जावा में कोडिंग जानते हैं, जो जावा में प्रोग्राम बनाना जानते हैं या जो प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, सिर्फ उनके लिए है। आम लोगों के लिए, आम मीन्स जिनको प्रोग्रामिंग नहीं सीखना है, नहीं बनाना है, तो उनके लिए JDK का कोई रोल नहीं है। दे कैन नॉट यूज इट बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू यूज इट। तो JDK वही है जिसके माध्यम से हम ये प्रोग्राम बना सकते हैं। और अभी मैं आपको इसका एक डेमो भी दिखलाऊंगा। अब जावा रन टाइम इन्वायरमेंट क्या है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जावा RT भी इसे कहते हैं। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग जावा एप्लीकेशन। दिस इज वेरी करेक्ट स्टेटमेंट रिटन। JRE आपके सिस्टम में उतना ही चीज रखता है या उतना व्यवस्था रखता है जिससे आप जावा ऐप को चला सके, जावा में बने प्रोग्राम्स को आप चला सके, उतना ही व्यवस्था ये JRE देता है। ये किन लोगों के लिए है? ये वैसे लोगों के लिए है जो जावा में बने एप्स को चलाना चाहते हैं। बहुत सारा बैंकिंग का ऐप या बहुत सारा ऐप ऐसा है जिसको जावा सपोर्ट चाहिए काम करने के लिए, तो वो सपोर्ट ये JRE आपको देता है। तो जावा सपोर्टेड मशीन में क्या होता है? सिर्फ JRE होता है। और इसमें क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ जावा वर्चुअल मशीन, JVM इसी में होता है, ठीक है। एंड कोर क्लासेस एंड सपोर्टिंग फाइल्स ये JRE में रहता है, जिससे होता यह है कि जावा में बने एप्स चल सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जावा के कोड्स को चलाने के लिए JVM की जरूरत होती है, जावा वर्चुअल मशीन। ये क्या है ये भी हम लोग देखेंगे एक बार। तो JRE जब हम डालते हैं अपने सिस्टम में, जब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं JRE, तो अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि JDK कैसे डालते हैं, JRE कैसे डालते हैं, सारा चीज मैं बताऊंगा आपको। तो ये सब डालते हैं तो हमारे सिस्टम में सेटअप साथ में हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे जावा वर्चुअल मशीन क्या है। A specification where working of Java version is specified, but implementation provide independent to choose the algorithm and all. यहाँ से समझते हैं इसको। फिर से एक बार आ रहा है JDK, चलिए फिर से आ रहा है, एक बार फिर से देख लेते हैं, चीजें और बेहतर हो जाएंगी आपके लिए। Which provide environment to develop and execute program. It's about JDK. JRE is what? Is an installation package which provide environment only run and not to develop. Wow. The Java program. JRE only is installed to run the Java program and not to develop it. Java programs or application to machine, JRE is only used by them who only want to run the Java program. That is end user, as I said earlier. JVM ये क्या है? ये एक सवाल है जो इसमें भी आता है एग्जाम में। Is very important part of both JDK and JRE because it contain or inbuilt in both. JVM, JDK सबसे बड़ा है। JDK जब हम अपने सिस्टम में डालते हैं तो JDK तो आ ही गया, डेवलपमेंट किट तो आ ही गया, JRE भी आ गया, JVM भी आ गया। मगर JRE जब डालते हैं तो सिर्फ JVM साथ में रहता है, ठीक है। तो हाँ यही है, because it contained inbuilt in both. Whatever Java program you run using JRE or JDK goes into JVM, and JVM is responsible for executing the Java program line by line. Hence, it is known as interpreter. This was discussed in the last class also, what is JVM, and in our previous class topic where compilers were being discussed, there also it was discussed. So let me discuss it once again. Let us take example of C or C++. C or C++ are such as programming languages where we need to compile the program, and once we compile C or C++ program, it gets converted to the object code which is directly executed by the
the operating system. But when we compile Java program, first we compile the Java program. Then when we compile the Java program, what happens? वो पहले इंटरमीडिएरी कोड में चेंज होता है, इंटरमीडिएरी ऑब्जेक्ट कोड में चेंज होता है कंपाइल होने के बाद, सारा चीज एरर वगैरह हटाने के बाद वो डायरेक्ट मशीन कोड में चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि कंप्यूटर, आपको पता है कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी भाषा या लो लेवल से समझता है, मगर जावा जो है सो हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसमें हम लोग जावा लैंग्वेज जो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है उसमें हम लोग कोडिंग करते हैं, तो कंप्यूटर उसे डायरेक्ट नहीं समझता, इट नीड टू बी कन्वर्टेड, ट्रांसलेटेड टू मशीन कोड. But in Java, it is not directly converted to the machine code. It is converted to the middle level code. Yes. तो जब हम इसे कंपाइल करते हैं जावा के प्रोग्राम को, तो वो मिडिल लेवल कोड में कन्वर्ट होता है, इंटरमीडिएट कोड जिसको कहते हैं हम लोग. फिर वो जो है वो जेवीएम के द्वारा एग्जीक्यूट होता है लाइन बाय लाइन. वो कोड जिसे हमने कंपाइल किया है वो फिर बाद में जेवीएम के द्वारा रन कराया जाता है. तो ये किस सिस्टम में रन हो सकता है? वैसे ही सिस्टम में ये रन कर सकता है जहां जेवीएम है. तो जेवीएम कैसे आता है? तो जैसा कि अभी आपने सीखा कि JRE आप इंस्टॉल करिएगा तो भी जेवीएम आ जाएगा, वो लाइट वर्जन हो गया जो प्रोग्राम रन कराने का. JDK करिएगा तब तो आ ही जाता है. तो इस तरह से जब आप JRE या JDK अपने सिस्टम में डालते हैं तो हमारा जेवीएम आ जाता है, और जेवीएम का काम है कि जो कोड कंपाइल हुआ है वो जेवीएम रन कराता है. इससे फायदा क्या होता है? वो डायरेक्ट क्यों नहीं कन्वर्ट हो गया? तो देखो, अलग अलग प्लेटफॉर्म होता है, विंडोज एक प्लेटफॉर्म है, एंड्रॉइड एक प्लेटफॉर्म है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म, इस तरह से बहुत सारे और भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं. तो अगर हमने किसी प्रोग्राम को विंडोज के लिए बनाया है तो वो विंडोज में सिर्फ रन करेगा. अगर मैंने विंडोज के लिए उसे कंपाइल कराया है तो वो विंडोज में रन करेगा, वो मैक में या एंड्रॉइड में रन नहीं करेगा. तो यही प्रॉब्लम होता है हमारा सी या सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स के साथ. हमें एक बार फिर से उसे मैक में कंपाइल कराना पड़ेगा अगर हम उसे मैकबुक में चलाना चाहते हैं, एंड्रॉइड में कंपाइल कराना पड़ेगा अगर हम उसे एंड्रॉइड में चला सकते हैं. मगर जावा के साथ क्या है कि हम एक बार कंपाइल करा दिए, अब उस कंपाइल्ड फाइल को हम दूसरे सिस्टम में चला सकते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म में चला सकते हैं, क्योंकि उस सिस्टम में फिर जेवीएम होगा, वो उसको समझेगा कैसे चलाना है. हमें, हमारी टेंशन ये नहीं है. तो जेवीएम से ये फायदा होता है. यही है जेवीएम. अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे एक चीज सिखाना चाहता हूँ. किसी बच्चे ने एक सवाल किया है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और प्रिंट एलएन में क्या अंतर है. उसी के एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक चीज दिखलाना चाहूंगा. इन अ न्यू प्रोग्राम, let me make this program, and meanwhile I'm making this program, let me first make it and then. So dear student, this is a simple program which also shows you the difference between print and println. Let us first, in order to run this program, you need to save it. I have saved it with this name. You can find it here. This is in the E drive, Java begin. Let me share the whole screen first. Okay, look at this program, a new program. It's to just show the difference between print and println. Let us save it. I've already saved it. Now let us compile it. You all know that this is the process of compilation. We go to the right location, E drive, Java begin is the folder, and Java C, and then what? The name of file, new.java. Look what it is telling you. The code execution cannot proceed because JLN was not found reinstalling. This is simply saying to you, or this kind of message tells us that JDK is not properly installed in it. Yes, right now in my system, JDK is not properly installed. Why? There's some reason behind it. So let me show you how we can have a JDK in my system. Okay. So you can go here, right? Download JDK. So you'll go to Oracle site, and there we'll find various version of JDK. So look, AC means standard edition. Okay, this is for different operating system: Linux, Mac, Windows. So I need this. So you need to first download this from here, and here select it. Now it will take some time. This is a large file. It is 160 MB file, and it will take some time. See here, it is getting downloaded here. So meanwhile, it is getting downloaded.
let us discuss something else. What is this? That's a difference. Let us talk about the difference between these two. Huh? Println simply prints the output in the same line, whereas println prints the output in the line but takes the cursor in the next line so that the next output will be placed in the next line. But if you are using only print, then what will happen? Things will be printed on the same line. As long as that line is going on, the things will be printed in the same line. Println does what? It simply prints something over the line and takes the cursor to the next line. It's like the effect of enter button. I mean, let me show you here only. Like this is a line. If we are using print statement, then this is a line will come here, and then the next output, which is this, will come in this line, the same line. ये होता है अगर हम प्रिंट यूज कर रहे हैं तो, और प्रिंट एलन जब यूज कर रहे हैं तो क्या होता है, जैसे कि अब देखिए अब हमारा प्रिंट एलन है यहाँ पर, देन इट द कर्सर विल गो टू नेक्स्ट लाइन. लुक एट दिस कर्सर, दिस इंसर्शन पॉइंट. Print ln takes the cursor to the next line. This is the only difference between print and print ln. So now let us come back and see. It is still getting downloaded. After getting downloaded, it will come in your download folder like this, and once you will double click it, it will start the execution like this. It will ask you press yes, and then the process of execution will start. I mean, the setup process will start like this. Then you have to press next button, and it will tell you that these things will go in this folder, this C drive program files, Java, JDK. Now this is how the JDK gets installed in your system. And as I said it, when JDK get installed, everything else like JRE, JVMs, everything get installed. And that depends on the size of the program and the capacity of your system. It will take the time. So the process has begun. It will take some time. So see, it's actually getting installed. After installation, this kind of thing will come, then close it. Now what has happened, you may go there and see program files, Java. Java is there, JDK. Look at the time and the date. This is right now, it's installed. So what you have to do, you have to go to this installed folder. You can see this in the video again and again. Go to the Win folder. Here you will find Java C command through which we compile the file. And then one more thing you need to do is to configure it. How to configure? You just copy this location, copy this location, and system environment variable. You have to set this. Edit system environment variable, and there go to environment variable. Here path is there. Edit it and new, paste it. Control V. Okay, okay, okay. Close this. Now you need to once exit it, the command prompt, and then again open it and go to the same folder. And this is how now you can compile it. Now it is compiling, although there is an error, you can correct the error. So, acha, new is a keyword. You cannot give new. Huh? New one, you just give it, save it, and now you just compile it. New one dot Java. Oh, it was not saved. Control S. Alt FA. New one dot Java. Now it will certainly work. It is working. There are some mistakes that you can correct it later on. But the matter is,